Hi kids, how are you all? I hope you're all doing fine. So we are back on your favorite learning platform, Learn Forward, and we will study from Pitara. This is chapter number 12, concept of zero. So, zero वैसे अकेले zero की कोई value नहीं होती, but if we put with the 1 0 is 10, 2 0 is 20, 3 0 is 30, and 1 0 is 100. So, जब वो किसी नंबर के साथ लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बट खाली जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं. So, in this chapter we will study the concept of zero कि जीरो खाली जब जीरो होता है तो उसका मतलब क्या होता है. So let's start now. So हमने काउंटिंग करी है 1 2 3 4 5 6 बट इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो ओनली. जीरो से काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है. सो जीरो का क्या यहाँ पे मीनिंग है? लेट्स नाउ स्टडी काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ द बर्ड्स ऑन ईच ब्रांच. अब हमें क्या करना है? बर्ड्स को काउंट करना है और बॉक्सेस में लिखना है. So as you can see in this branch there are 0 birds. So this is 0. यहाँ पे इसमें एक भी bird नहीं है, so इसका मतलब 0 birds are there. So 1 2 3 4 and in this picture there are 4 birds. So ये फर्क होता है. 0 मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है. And there are 4 birds in the second picture. Now how many cows are there behind each fence? अब हर एक फेंस के पीछे कितनी cows हैं? इस पिक्चर में कोई काउ नजर आ रही है? नहीं ना. सो देयर आर 0 cows in the picture and in this picture we can see 2 cows. Now how many rats are in the cage? Cage में कितने rats हैं? So in this picture we can see only one rat and in this picture there are no rats, so this is 0. And now in this picture you can see 1 2 rats are there. So if you have 5 toffees and if you give them to your 5 friends, अगर आपके पास 5 toffees है तो अब आपने अपने सारे friends को दे दी 5 toffees, आपके पास कितने बचे? 0 toffees है ना. So 0 का मतलब होता है ये. Now look carefully at these two pictures. अब दो पिक्चर्स देखेंगे और इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे कि इस पिक्चर में और इस पिक्चर में क्या फर्क है. Can you spot 10 differences in the bottom one? अब हमें क्या करना है? हमें नीचे वाली पिक्चर में 10 डिफरेंस ढूंढना है. So let's start now. So let's start from here. कंपेयर करेंगे इन दोनों विंडोज को. So in this window we have a moon but here there is no moon. So one difference is there. I am going to take here. Now what is the second difference? Let's check this. So there are no books on the table. इस पिक्चर में तो कोई बुक्स नहीं है. So ये डिफरेंस है. Now there is no ball in the second picture. So 3. Now we will find another difference. You can also see that there is no mat in the picture. यहाँ पे तो mat नहीं है. So 4 difference हो गए. Now you can also see कि यहाँ पे एक white AC लगा हुआ है but there is nothing here. So ये हमारे 5 difference हो गए. And let's see, there is no bag in the picture. आप देख सकते हो इस पिक्चर में तो कोई बैग ही नहीं है. So कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. Let's find another. So this is the 7th. इस पिक्चर में you can see racket and shuttlecock but there is no racket and shuttlecock here. And now teddy bears are same. So there is no scenery. इस पिक्चर में you will find no scenery. आप कितने रह गए? Let's find it again. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 are done. Let's find 2 more. Now I think I should give you this homework. So you can do the difference. You can spot only 2 differences are left. So you can write the difference or you can tick the difference in your book. Now we have done it. We have completed the chapter by studying the concept of zero. If you have any problem, you can watch it again. Thank you so much. Happy learning.